हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और कैसे लग रहे हैं आपको ये वीडियोस? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जेपीएससी प्रीलिम्स की जनरल स्टडीज के पार्ट के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ आजकल, और ये क्वेश्चंस आपके काफी काम आएंगे एग्जाम्स में, क्योंकि मैं क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। ना सिर्फ इस जेपीएससी एग्जाम के लिए बल्कि और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर जनरल स्टडीज का पेपर होता है, उसके लिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो नंबर 3 आज शुरू करेंगे हम। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज हमारा वीडियो नंबर 3 होने जा रहा है, जहां हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए मेरी सीरीज को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, उसके लिए थैंक यू। अपने पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, और आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिवाइडेड बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आज का मेरा पहला सवाल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। द करेक्ट आंसर इज 26 November 1949. It was adopted on 26 November 1949 by Constituent Assembly of India. The provisions related to citizenship, elections, provisional parliament, temporary and transitional provisions were given immediate effect from November 26, 1949. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसको कि हम आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। It is the longest written constitution of any country on the earth. B.R. Ambedkar, chairman of the drafting committee, is widely considered to be the chief architect of it. Which article deals with fundamental duties? The correct answer is option C, Article 51A. Article 51A of Indian Constitution was added by 42nd Amendment Act. तो मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आपके बहुत काम आएंगी। 1976 में इसको ऐड किया गया था, इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर इंडियन सिटीजन्स। 11 ड्यूटीज यहाँ पर एनलिस्ट हैं, विच इंक्लूड रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम अमंग अदर्स, एंड these duties actually serve as moral obligation for citizens to promote the spirit of patriotism and to maintain unity and integrity of India. Although non-punishable होती है, not enforceable by law, I mean to say, they act as a reminder for citizens to behave with responsibility and to contribute in a positive manner to society. These duties are inspired by Constitution of USSR, जो once upon a time USSR हुआ करता था, सोवियत रशिया, and reflect the Gandhian philosophy of duties and responsibility of citizens. तो आइए थोड़ी और बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। जो भी मैं बात करूंगी वीडियो में, आपके एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करिए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, ये 1976 का है। इट वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। कमेटी का नाम आ सकता है आपको। इनिशियली 10 फंडामेंटल राइट ड्यूटीज थी। 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था, उसमें एक और ड्यूटी ऐड की गई, मेकिंग देम 11 इन टोटल, विच इज टुडेज नंबर। द न्यू ड्यूटी रिक्वायर्स पेरेंट्स और गार्जियंस to provide education to children aged 6 to 14 years. तो ये देखिए कितने सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपको काम आ सकते हैं एग्जाम्स में। ये है आपकी ड्यूटीज। रिस्पेक्ट सिंबल्स, फॉलो नोबल आइडियल्स, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, नेशनल सर्विस, प्रमोट हार्मनी, प्रमोट प्रिजर्व हेरिटेज, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, साइंटिफिक टेम्पर, पब्लिक प्रॉपर्टी, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, एंड द लेटेस्ट एडेड वन, ड्यूटी टू एजुकेट। तो इन सबको आप याद रखिए, काम आ जाएगा आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज borrowed from. The concept of judicial review has been borrowed from the Constitution of the United States of America. According to the judicial review, the court has the power to review the rules and laws
determine their constitutional validity and also invalidate them in case they violate the Constitution. और जुडिशियल रिव्यू से जुड़े हुए आर्टिकल्स ये हैं, ये आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए 13, 32, 131, 136, 143, 226 and 246. Next question. The power to amend the Constitution lies with Parliament, President, Supreme Court or state legislature. The power to amend or change the Constitution of India lies with the Parliament under Article 368. This is more important. आपको article number आ सकता है exam में. Parliament can change the Constitution through a special majority, though it cannot alter the basic structure of the Constitution established by the Supreme Court. Next question. Panchayati Raj system was recommended by, and the correct answer is option A, Balwant Rai Mehta Committee. 1957 में किया गया था ये. It recommended the three-tier Panchayati Raj system in India to promote democratic decentralization. Often called the father of Panchayati Raj too, Mehta proposed a structure consisting of Gram Panchayat, that is village, Panchayat Samiti, that is block, and Zilla Parishad, that is district. तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है. छोटी छोटी चीजें बहुत काम आ सकती हैं एग्जाम्स में. Which article of the Constitution of India deals with the right to constitutional remedies? The correct answer is Article 32. B.R. Ambedkar ji ने इस article को बोला heart and soul of the Constitution because it allows citizens to approach the Supreme Court of India to enforce fundamental rights. आर्टिकल 32 के बारे में कुछ बातें देखते हैं. अपने आप में ये एक फंडामेंटल राइट है. सुप्रीम कोर्ट कैनॉट रिफ्यूज टू हियर अ केस इन्वॉल्विंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. मैंडेटरी है ये. सुप्रीम कोर्ट को पावर प्रोवाइड करता है टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स फॉर जस्टिस. किस तरीके के रिट्स ये भी देख लीजिए. यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. हीबस कॉर्पस, किसी पर्सन को अगर डिटेन किया गया है, टू रिलीज अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड. Mandamus commands a public official or body to perform their public duty. अगर कोई public official या पूरी की पूरी body अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रही है तो that can be forced. Prohibition issued by higher court to lower court to stop it from exceeding its jurisdiction. Quo warranto, आप क्वेश्चन कर सकते हैं legality of any person holding a public office. Certiorari, it quashes an order already passed by an inferior court or ट्रिब्यूनल. सर्शियोरेराई काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ये सभी. आप इन सभी को भी देखिए. इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम्स में. Which body is responsible for conducting elections in India? Election Commission is the right answer. The Election Commission जो कि एक independent constitutional body है, it is responsible for conducting elections. It is empowered to conduct free and fair elections in India established by Constitution of India headed by a Chief Election Commissioner and consists of two other election commissioners as constituent members. The commission is headquartered in New Delhi. Headquarter से related questions भी आ सकते हैं. Next question. Which amendment lowered the voting age in India from 21 years to 18 years? The correct answer is 61st Amendment Act. 61st Amendment of Constitution of India, officially known as the Constitution Act 1988, lowered the voting age of elections to the Lok Sabha and to the legislative assemblies of states from 21 years to 18 years. This was done by amending Article 326. जो भी मैं additional details दे रही हूँ वो याद रखिएगा. Article 326 of the Constitution, which concerns elections to the Lok Sabha and Assembly. 61st Constitutional Amendment Act 1988 but came into effect on March 28, 1989. Next question, question 34. Which schedule of Constitution
deals with the distribution of powers between the union and states. Correct answer is 7th schedule. 7th schedule deals with the distribution of power between union and state containing 3 lists और ये 3 lists हैं union list, state list and concurrent list. Union list subjects of exclusive jurisdiction for the central government such as defense, foreign affairs, banking. State list subjects under the exclusive jurisdiction of state government such as police, public health and agriculture. And concurrent list subjects on which both the union and state government can legislate such as education, forests, marriage and many other issues like welfare and criminal laws. Next question, PIL का concept किसकी जुडिशरी में इंट्रोड्यूस किया गया था? The correct answer is P.N. Bhagwati. P.N. Bhagwati was the 17th Chief Justice of India, serving from 12th July 1985 until his retirement in 1986. He introduced the concept of PIL and absolute liability in India, and for this reason is held along with another Chief Justice V.R. Krishna Iyer. इनके बारे में भी कभी बात करेंगे. V.R. कृष्ण अय्यर जी के साथ ये कहलाते हैं पायनियर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन द कंट्री. लॉन्गेस्ट सर्व्ड सुप्रीम कोर्ट जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस टेन्योर इन इंडिया. आइए जानते हैं पीआईएल के बारे में कुछ और बातें. इन दिसंबर 1979 लॉयर कपिला हिंगोरानी जी ने मदर ऑफ पीआईएल भी बोला जाता है, filed a petition about the poor condition of under trial prisoners in Bihar jails. The case was heard in the Supreme Court of India by a bench led by P.N. Bhagwati. It was filed in the name of prisoner Husainara Khatun. तो हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यही इस केस का नाम हुआ. The court ordered a free legal aid and speedy trials, leading to the release of 40,000 prisoners, about 40,000. Later, the term PIL was explained in S.P. Gupta versus Union of India based on Article 39A. PIL promotes equal justice and free legal help. Before 1980s, only the affected person could approach the court, but after PIL, any citizen or NGO could file a case for public interest. Judges P.N. Bhagwati and V.R. Krishna Iyer played a key role in developing PIL in इंडिया. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मैं आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूं जो कि आपको एग्जाम्स में आएंगे.